Assalamu alaikum students. I am going to start lecture number 10 of the whole database systems course. Today I am going to explore some more topics in this course. So today's topic is integrity constraints. Earlier we had covered various topics like ERD, relational database, and some others. But today we will focus on integrity constraints. चूँकि ये जो है कोर्स का एक बहुत ही अहम पार्ट है, तो हम जो है इस को आज इस लेक्चर में कवर करेंगे. बेसिकली हम जब डेटाबेस सिस्टम्स में ERD या रिलेशनल मॉडल बनाते हैं, तो उसमें हम जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं. ओके, so we call them as integrity constraints because they are related to integrity. Integrity means the completeness when there is no corruption in data or there is no incompleteness in data. So your data should be complete and accurate. So this is called integrity. And for that we have three types of constraints that represent integrity. So the first of them is domain constraint, second is entity integrity, and the last one is referential integrity. So let me start from the first one, that is called domain constraint. Now what is domain constraint? Basically domain है क्या चीज़? All of the values that appear in a column of a relation must be from the same domain. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक कॉलम के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे तो वो सेम डोमेन से होने चाहिए. डोमेन का मतलब ये है कि अगर हमने किसी कॉलम को इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, यानी उसका टाइप इंटीजर है, तो हम जो है उसी कॉलम में इंटीजर वैल्यूज़ ही एंटर करेंगे. लाइक यहाँ पे है प्रोडक्ट आईडी. सो सपोज ये हमारे पास है, यहाँ पे सपोज इट इज़ कैरेक्टर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर ही एंटर करेंगे. अगर हमने किसी भी कॉलम को, लाइक यहाँ पे है ऑर्डर क्वांटिटी, सो इट इज़ इंटीजर. सो अगर वो इंटीजर है तो हम फिर क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट इंटीजर वैल्यूज इनटू दैट कॉलम. इनके अलावा साइज़, अगर सपोज हमने इसे कहा है कि जो साइज़ है डेटा का वो हमारे पास है 5, तो इट मीन्स कि हमने वहाँ पे 5 का की लेंथ में डेटा को फिर एंटर करना होता है. आपने इसी लिमिट को फिर एक्सीड नहीं करना होता. ठीक है. इसके अलावा है अलाउएबल रेंज, यानी हम किस वैल्यू से किस तक जो है डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने किसी भी कॉलम के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, तो इसे कहते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट. ठीक है. A domain is a set of values, यानी ये हमारे पास क्या है, a set of values that may be assigned to an attribute. यानी अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को कोई वैल्यू देनी है तो वो एक डोमेन के अंदर होगी. इंटीजर कॉलम है तो इंटीजर इंसर्ट करेंगे, लाइक इन और लेक्चर नंबर 6 और 5 एंड सो ऑन जो हमने SQL सर्वर के अंदर काम किया है, तो उसके अंदर हमने कस्टमर आईडी इंसर्ट की और कस्टमर आईडी हमने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया था, तो आप इंटीजर ही एंटर करेंगे. इनके अलावा हमने कस्टमर नेम को एज अ वारचार एंटर किया, तो हम इसमें वारचार यानी कोई स्ट्रिंग ही एंटर करेंगे. ओके. So you should keep this constraint in mind that the domain constraint must be followed strictly, otherwise you may face the error. अच्छा, the second is entity integrity. Now what is entity integrity? It simply means that every relation has a primary key and that primary key value is unique and it should not be null. Okay. The entity integrity rule, ये जो हमारे पास constraint या rule है, it is designed to ensure that every relation has a primary key. ये देखिए constraint ये कहता है कि हमारे पास एक primary key होगी and the data values for that primary key are valid and unique. Unique values हमारे पास होंगी. In particular, it guarantees that every primary key attribute is non-null या not null. दूसरा इसका कंडीशन ये है कि जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को एज ए प्राइमरी की यूज़ करेंगे, लाइक यूर NIC कार्ड या कस्टमर आईडी, जो भी आप प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे, तो उस प्राइमरी की के
के अंदर आप जो है कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर इंसर्ट करेंगे, यानी इट शुड नॉट बी नल, आप इसके अंदर नल नहीं लिख सकते। Like in lecture number 6, as we entered added some new columns, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल की वैल्यू आई थी, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की जो है इसमें जो है आप नल नहीं दे सकते। हाँ, प्राइमरी की के अलावा अगर आपने दूसरे एट्रीब्यूट्स को लाइक नेम है या कोई एड्रेस है, अगर आपने उसको नल डिक्लेयर किया है तो देन उसके अंदर नल आ सकता है, बट फॉर द प्राइमरी की इट शुड बी नॉट नल। ओके, अच्छा अब ये नल है क्या चीज़? अच्छा, ये तो आपको पता चल गया ना कि व्हाट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मींस कि वी शुड हैव अ प्राइमरी की एंड दैट प्राइमरी की शुड नॉट बी नल। अच्छा, नल क्या चीज़ है? नल मींस a value that may be assigned to an attribute when no other value applies or when the applicable value is unknown। अगर आपके पास वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नल पर लगा सकते हैं। नल जो है इट्स नॉट अ वैल्यू, नल वैल्यू नहीं है, इट सिंपली शोज द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। यानी आपने किसी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू एंटर करनी है और आपके पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। लाइक आपका सपोज आपकी आईडी है, आपका सपोज नेम है, आपका एड्रेस है, लेकिन आपकी सपोज क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है, तो फिर आप क्वालिफिकेशन के एट्रीब्यूट के अंदर नल लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती या आपके पास कोई वैल्यू अननोन है, then you should put here the null option. In reality, a null is not a value, but rather it indicates the absence of a value. Okay, so this was the second constraint. The third is called a referential integrity. So this simply means in the relational data model, associations between tables are defined through the use of a foreign key. जिस तरह मैंने पहले भी बताया है लेक्चर्स में कि फॉरेन की क्या चीज़ है। फॉरेन की का काम ये है कि वो किसी भी दो या इससे ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को जाहिर करता है, ठीक है। एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, अगर आपके पास टेबल्स दो हैं, ऐसे ज़्यादा हैं, और आप कहते हैं कि हम इनके बीच में रिलेशनशिप जो है ना वो ले आए, देन यू शुड declare a foreign key there। Okay, in the mapping we have studied this in detail when we were studying binary relationship, ternary and unary। Okay, shortly you will see a simple example too. For example, in the figure 4.4 in the book, association between the customer, यानी हमारे पास suppose दो tables हैं, एक का नाम है customer, the second table is called order। Okay, it is defined by including the customer ID attribute as a foreign key in the order table। यानी हमने customer ID का जो attribute है उसको हमने order table में क्या करना है, हमने इसको order table में एज ए फॉरेन की डिक्लेयर करना है। ओके, like in this example you can see here, let me zoom it, there is a table called customer has a primary key। Okay, when a primary key is declared it is called entity integrity, but this is another table relation called order, this order id is the primary key of this order relation, uh, but in this case you can see here this customer id is primary key for this relation and this is foreign key here in order relation। Similarly, in the order line you can see the port id which is the primary key for this relation and it is a foreign key in this order line relation। Okay, so it means that the primary key of one relation would be the foreign key of the other relation. This is called a referential integrity. So in database systems you have to keep these three rules in mind. Let me show you this example in yes, here in this slide you can see I have taken this snapshot from the book
This is the customer table where we have customer ID, customer name, address, customer city, etc. This is the order table, order ID, order date, and the customer ID is here. So this customer ID is the primary key for this table, while here in this table it is serving as the foreign key. Now why it is the foreign key? Because the customer ID is 1 and the foreign key value is also 1. So it means that the order ID number 1001 on this date 10/21 अक्टूबर जो है अक्टूबर 2010, okay, is the date, and this order number 1001 is placed by this customer number 1. Now who is this customer number 1? It is here. His name is contemporary, customer name is contemporary casuals, address is this one, and this is the history of the customer number 1. Okay, here you can see the order ID is 1002 and it is placed by the customer ID number 8. Now who is number 8? Here you can see the California Classics. Okay, so this customer has placed this order. This is called differential integrity, and this is done by the foreign key. Okay, so these were three integrity constraints, and we have to keep them all in mind. Okay, now let's move on to another topic that is called well structured relation. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ पे जो बुक जो है modern database management 11th edition, in this book on page number 158, on this page you can see this topic integrity constraints, so which I covered. So for details, if you are interested, you can visit this book and you can study this in detail. This was the diagram as I just explained, and so this was the integrity constraint. Now the next topic is well structured relation. Okay, um, in database, the relations are called well structured when they don't have any anomaly. Okay, anomaly means इसमें कोई error या inconsistency ना हो. So a relation that contains minimal redundancy. Redundancy means duplication. Okay, and allow users to insert, modify and delete the rows in a table without errors. यानी किसी भी टेबल के अंदर क्या हो, डुप्लीकेशन न हो और उसमें आप इंसर्शन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन आराम से कर सकते हो without any error or without any inconsistencies. Redundancy in a table may result in errors or inconsistencies, as I said earlier. So we call these errors and inconsistencies as anomalies. Okay, now we have a total three kind of anomalies in the database systems. Okay, so the first anomaly is called insert anomaly, second deletion, and the modification anomaly. We can also call it update anomaly. So let me explain the first one. It's called insertion anomaly. What is insertion anomaly? Before explaining the example in the table, let me simply give you an idea. इंजर्शन एनॉमली हमारे पास ये है कि जब आप किसी ऐसे टेबल में जो कि प्रॉपरली वेल स्ट्रक्चर्ड ना हो, यानी वो जो टेबल है उसमें कुछ एरर्स हों, ठीक है, और आपने अभी तक वो एरर्स रिमूव नहीं किए हों, इट मीन्स कि वो टेबल जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसमें फिर इंसर्शन एनोमली आएगी. वो क्या होगी? तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय 2. उस टेबल के अंदर इंसर्शन एनोमली है. वो क्या है? that the primary key for this relation is the combination of employee ID and course title. Okay, अब ये जो एम्प्लॉय टेबल की तरफ मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर जो प्राइमरी की है वो हमारे पास दो एट्रीब्यूट से बनी है. द फर्स्ट इज एम्प्लॉय आईडी एंड द सेकंड इज course title. So therefore, to insert a new row, the user must supply values for both the employee ID and course title attributes. Okay, because the primary key values cannot be null or non-existent. Like here you can see in this table,
we have this employee number 2 relation. This is the employee ID and this is the course title. So suppose employee ID and course titles are the primary key of this relation. So अगर मैं यहाँ पे suppose extra record insert करूँगा employee ID number suppose 160, employee ID number 160. So if I enter employee ID number 160, this is the name is blah blah, department name is this one and salary is this one. अब मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, चूंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, मैंने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो एंटर किया लेकिन मैंने अभी तक कोर्स का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। तो अगर मैं इनमें से किसी भी, अगर मैं यहाँ पे कोर्स टाइटल का जो सेल है इसको मैं नल छोड़ दूं या खाली इसमें मैं इंसर्शन ना करूं, तो इट मींस कि यहाँ पे मुझे फिर नल इंसर्ट करना पड़ेगा और चूंकि ये प्राइमरी की होगी तो प्राइमरी की शुड नॉट बी नल, तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपने एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ आपने कोर्स टाइटल को भी जरूर इंसर्ट करना है। ओके, सो इट कैन बी एन एरर because you have to enter the values of employee ID and course title both। अगर आप एक एंटर करेंगे दूसरी आप एंटर नहीं करेंगे तो then you would face the music, there would be an error. This is called insertion anomaly. The second is called deletion anomaly. Suppose that the data for employee number 140 are deleted from the table. हम इस तरह करेंगे कि टेबल से हम 140 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। अब चेक करें कि 140 नंबर कहाँ पे है। सो 140 इज हेयर, इट इज एलन बीटन। जो रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे, अकाउंटिंग इसका डिपार्टमेंट का नेम है, इसकी सैलरी है हमारे पास 52,000। तो अगर हम ये रिकॉर्ड डिलीट करेंगे लाइक डिलीट फ्रॉम टेबल नंबर दिस वेयर द रिकॉर्ड इज दिस वन, सो इसके साथ जो टेक्स्ट वाला टेक्स्ट अकाउंटिंग वाला जो कोर्स टाइटल है ये भी हमारे पास डिलीट हो जाएगा along with the date. So it means that हम एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करना चाह रहे थे 140 को और एक साथ हमने डिलीट किया कोर्स नंबर टैक्स अकाउंटिंग को भी। तो इट मीन्स दैट इस टेबल के अंदर भी एनोमली मौजूद है बिकॉज हम रिकॉर्ड डिलीट करते हैं एम्प्लॉय आईडी की या एम्प्लॉय का और साथ वो डिलीशन हो जाती है कोर्स टाइटल की भी। सो दिस इज आल्सो एन एनोमली। इस तरह हमारे पास जो है द थर्ड ऑप्शन इज मॉडिफिकेशन एनोमली और अपडेट एनोमली। सो अपडेट एनोमली का मतलब ये है कि व्हेन वी वांट टू अपडेट सम रिकॉर्ड, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को जब हम अपडेट करेंगे तो अगर आपके टेबल के अंदर एनोमली है तो दिन आपको मॉडिफिकेशन जो है ना मोर देन वन प्लेस पे करनी पड़ती है। Like suppose that employee number 100 gets a salary increase। अब जो employee 100 है यहाँ पे उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। ओके, सो वी मस्ट रिकॉर्ड द इंक्रीज इन ईच ऑफ द रोज फॉर द एम्प्लॉय। तो अब 100 हमारे पास यहाँ पे भी है और नीचे यानी दो जगहों पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है ना वो रिपीट हुआ है। इट मीन्स दैट देन वी हैव टू अपडेट दिस सैलरी फ्रॉम 48,000 तो सपोज इसमें 5,000 का इंक्रीज आया है तो हमें इन दोनों रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी नंबर 100 यहाँ पे और जो दूसरा रिकॉर्ड है 100 यानी दूसरे वाले ये, तो हमें इन दोनों को फिर 5,000 प्लस करना पड़ेगा। यानी हम जो है दो जगह पे अपडेशन करेंगे तो ये भी हमारे पास एक रिडंडेंसी या एक एनोमली है। ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एनोमलीज। अगेन आई वुड से दैट इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, अगर आपको फिर भी इनमें थोड़ा सा मसला है तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग स्विच करें बुक की तरफ और जो पेज नंबर 162 है इस पेज के ऊपर जो है ये टॉपिक जो है वेल स्ट्रक्चर रिलेशन का, तो ये टॉपिक यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो है ना इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड मॉडिफिकेशन और अपडेट एनोमली, तो इनको आप जो है ना यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो यू कैन सी हेयर देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एनोमली, ये तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।